Amid hopes of a breakthrough in the showdown between doctors and the Mamata government in Bengal, we can now tell you that the dialogue is yet to begin. 2 hours now, Mamata says she's been waiting for the doctors' delegation and they haven't turned up. The doctors refuse to enter the meeting venue because they say that our demand for a live broadcast of the meeting with Mamata Banerjee hasn't been met. Let's play out for you what Mamata Banerjee is currently saying. সেই আলোচনার মধ্যেই আমাদের থাকতে হবে, তার কারণ তার উপরে আমরা উঠতে পারি না। যদি কারো বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ থাকে, সিবিআই তো কেস করছে, তাদের কাছে তারা জানাতেই পারেন। কেস তো এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের কাছে নেই। আর দুই হচ্ছে টেলিকাস্টের ব্যাপারেও আমরা ওপেন মাইন্ড, কিন্তু আমাকে কতগুলো প্রসিডিউর মানতে হয় যখন ম্যাটারটা I have to follow some procedures. বিচারাধীন থাকে। This matter is sub judice. কেউ যদি হট করে, কারণ বাইরে আমরা অনেকগুলো দেখেছি যেখানে সিজেকেও ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে, হট করে যদি কেউ এই নিয়ে মন্তব্য করেন তাহলে আমার কি দায়বদ্ধতা থাকবে না? না আমাদের সরকারি অফিসের যারা প্রধান অফিসারদের I am responsible for that to maintain the sanity of the Supreme Court, because if I go for a live broadcast of this entire meeting, because I saw that there are chances that anybody can, disrespect the Supreme Court as well. I saw in many places people are criticizing the Supreme Court with regard to this matter. আমরা খোলা মন নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। As you know, we wanted to discuss this thing with the protesting doctors with our open mind. এবং যদি মিটিংটা ফুটফুল হতো, আমরা জয়েন্টলিও প্রেস করতে পারতাম, প্রেসকে ওখানে ডেকে নিয়ে। আমি তো নিজে ওই যেখানে মিটিং ছিল সেখান থেকে প্রেস করতে পারতাম আপনাদের, আমি তো করিনি। তার কারণ I was ready for a joint press conference after conclusion of this meeting. If the meeting goes fruitful, we could have addressed the media jointly. We were prepared for that. We have a system put in place in the Nabanno, which is the state secretariat, to record the entire meeting at Nabanno Shobhaghar. জেদা জেদি না করে, দুচ্ছাই না করে, ডাক্তারদের স্বার্থে এবং রোগীদের স্বার্থে মানবিকভাবে এই আলোচনা আমাদের সাথে করবেন। আমি এখনো বলছি, তারা যে 2 ঘন্টা আসেননি, I was expecting that my sisters and brother, for the sake of the patients and doctors, they would have come on the same table to discuss, to resolve all issues. এবং তারা আমরা বলেছিলাম চিঠিতে যে আপনারা 15 জন আসবেন, সিএস লিখেছিলেন। তারপরেও তারা later I told them to come with 15 of their members. আমরা সবাইকে অ্যালাউ করেছিলাম। In spite of the fact they came with 30 members, but we did not stop them. কেন ঢুকলেন না আমি জানি না, বাট যে কারণে তারা ঢুকলেন না, I don't know why they did not turn up in the meeting. যদি তাদের পছন্দ না হতো, কিন্তু আমাদের 2 ঘন্টা ধরে রেগুলার অপেক্ষা করি, 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা, আমাদের তো কাজকর্ম আছে। আমি নিজে টেলিফোন পর্যন্ত ইউজ করিনি 2.5 ঘন্টা। We were waiting for over 2 hours. We have many other jobs to do. এবং আজকে আপনারা ভাবুন, যদি কোনো এমার্জেন্সি সিচুয়েশন হয়, আমার কাছে মেসেজ আসতে পারতো, চিফ সেক্রেটারির কাছে পারতো, ডিজির কাছে পারতো, হোম সেক্রেটারির কাছে পারতো। তা সত্ত্বেও আমরা ইভেন ওদের যাতে অসুবিধা না হয়, ওদের সাহায্য করার জন্য আমি হেলথ ডিপার্টমেন্টে we also requested our men, including officials, not to keep their mobile phones with them when they are inside the meeting. We have to keep in mind, if any emergency situation arises, we won't be able to get aware about that thing, as we have no mobile phone with us. 27 জন মানুষ মারা গিয়েছেন এবং
7 লক্ষর ওপর মানুষ পরিষেবা পায়। Let me tell you, as of now, already 27 people have died because of this movement. 1,500 সিরিয়াস কেস, এমার্জেন্সি কেস, যাদের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, হার্ট অপারেশন হবে, তারাই 32 দিন ধরে অপেক্ষা করছেন। কিডনিতে ক্যাথল্যাব চেঞ্জ করবার জন্য over at least 1,500 patients are waiting for their turn for heart operations in many government run hospitals in last 1 month. মৃত্যু করার জন্য, মৃত্যু হবার জন্য বিনা চিকিৎসায় যে সরকার, বামফ্রন্টের আমলে মাত্র 12টা মেডিকেল কলেজ ছিল, আজকে আমরা 35টা করেছি 11 বছরে। আমরা 43টা মাল্টি সুপার হসপিটাল করেছি। আমরা প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় সাব ডিভিশন এইচডিইউ করেছি, এসএনসিইউ করেছি, ইনস্টিটিউশন ডেলিভারি, প্রেগন্যান্ট মাদার পর্যন্ত We have built many medical colleges, sub-divisional hospitals across the state during our tenure, which is much higher than the previous government. দূরবর্তী অঞ্চল, জঙ্গল বা পাহাড় বা গঙ্গাসাগরের মতো অঞ্চল, সুন্দরবনের মতো অঞ্চল, আমাদের সিস্টেম করে দিয়েছিলাম যে আমাদের পেশেন্ট, even in places like Gangasagar or in Sundarban, which is a remote area of Bengal, there are health facilities in order. এখানে নিয়ে যাবে, কারণ মায়ের গর্ভ যন্ত্রণা উঠলে তখন কিন্তু মা অপেক্ষা করতে পারে না। There are many super specialty hospitals have been built over there so that ill patient can be treated so easily. সে কিন্তু অপেক্ষা করতে পারে না, কারণ আমরা বলি হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এগুলো ধাক্কা মারলে মানুষের প্রাণ চলে যেতে পারে, এগুলো প্রাণঘাতী। Anybody suffered heart attack or something like stroke, he can't wait for treatment, he need emergency treatment. ডায়ালিসিস হওয়ার পরে চেঞ্জ না করার জন্য মারা গেছে পিজিতে, বিক্রম মারা গেছে আরজি করে, তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দুটো পা দিয়ে। Mamata Banerjee there speaking live, saying very clearly that all attempts have been made by the government to break the impasse with the protesting doctors, but says she waited for 2 hours. This delegation didn't meet with her, and that's because their demand, seeking a live telecast of the meeting with Mamata, was shot down. Mamata, in her defence, has said that because the matter is sub judice, not everything can be discussed, which is why we didn't want to put it out live. We were willing to record the proceedings and hand over the recording as well. We'll continue tracking what really plays out on that front. Hopefully, we will see that stalemate coming to an end. But let's move on to the other big story of the day, the big political showdown over the Ganesh Chaturthi Puja at the CJI's residence by the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, and Prime Minister Modi. It's triggered a big political storm, with the opposition saying that this shows that the judiciary's independence has completely been compromised. You had the BJP immediately hitting back by putting out pictures showing that in the UPA era, the then Chief Justice would attend an iftar party with the then Prime Minister Manmohan Singh. Shri Ganesh to a political war. Big meltdown over Prime Minister Narendra Modi's visit to CJI D.Y. Chandrachud's residence for Ganpati Puja. The opposition came down heavily on the meet, questioning the CJI's independence. संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। This is not a proper conduct. Of course, there is a separation of institutions. That means the power, legislature, executive, and judiciary. It was his private function in which he would have not invited, and Prime Minister would have also not accepted it. भारतीय जनता पार्टी पूजा अर्चना का इस्तेमाल
राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए करती है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि कल की पूजा का मकसद लोगों के दिमाग में हलचल पैदा करना। आप क्या चाहते हैं? कैन नॉट। Hitting back, the BJP termed the opposition's attacks a disrespect to judiciary, CGI and Lord Ganpati. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं, उस पे आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं, उस पे आपत्ति नहीं है। जो पीओके के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। Sources tell India Today that the CGI sent out invitations to several dignitaries, including Prime Minister Modi. Supreme Court judges and other officials were also present at the CGI's residence for Ganpati Puja. Sources also revealed that Modi's visit was very brief and he left the CGI's residence immediately after the puja. Bar Council said there is nothing wrong with Prime Minister's CGI joint puja. Our Honorable Prime Minister visited the house of the Chief Justice of India for attending a puja ceremony. There is nothing wrong in it. It is not going to affect the health of our judiciary. It is not going to affect or influence any judgment either by this our Chief Justice of India or by the Supreme Court. Many senior lawyers have criticized CGI Chandrachud for what they described as compromising the division of powers between the judiciary and executive. Bureau Report, India Today. And in an exclusive interaction with the India Today, Union Minister Jitendra Singh hit out at all of the politics surrounding the CGI Prime Minister's Ganpati Puja. एक बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर एक जवाब मैं आपसे चाह रही थी बतौर केंद्रीय मंत्री। विपक्ष का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब के घर पर गणेश चतुर्थी के मौके पर नहीं जाना चाहिए था। ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन दिखाता है। इस पर आपका, आपकी सरकार का क्या जवाब होगा? सबसे पहले तो अंजना जी, मैं आपको बधाई दूंगा। आप बधाई के पात्र हैं। इंडिया टुडे group and the family for having organized this beautiful show at a beautiful venue, and I'm sure you're going to set a new trend. आपको देख के और भी इस तरह के यहाँ पर आयोजित होंगे, and in a way this is not only going to be a news conclave, you're actually contributing to the mainstreaming of Jammu and Kashmir and the Kashmir Valley. कॉपी पेस्ट वाले सर बहुत हैं, आने वाले ओरिजिनल हम ही हैं। बिल्कुल, आप as it has always been, आप हमेशा ओरिजिनली रहे। एंड हैविंग सेड दैट, जहाँ तक ये जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया, हकीकत ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, और चुनाव का समय है। और जैसे हमारे प्रवक्ताओं ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से इसका स्पष्ट तरीके से इसको जाहिर भी किया कि ऐसा नहीं है कि पहली सरकारों में नहीं होता था। पहली बात तो ये कि यूपीए सरकार में भी होता रहा, वहाँ तो इफ्तार पार्टियां होती थी, वहाँ जज भी जाते थे, चीफ जस्टिस भी जाते थे। जस्टिस बाला सुब्रमण्यम भी गए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इफ्तार पार्टी की। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी के घर में कोई सोशल फंक्शन है या रिलीजियस फंक्शन है, तो या फिर उदाहरण के तौर पर शादी ब्याह है, तो क्या फिर जज को ये भी पाबंदी है कि वो किसी को आमंत्रित नहीं कर सकता? अब आखिरकार वो है तो समाज का एक सदस्य। ऑफ कोर्स it is acknowledged that a sense of propriety has to be observed by a legal functionary, but that does not mix with his social life, and also the observance of the social responsibilities or obligations. कल तो फिर आप कहेंगे कि जज अपने बच्चों का शादी ब्याह भी नहीं कर सकता, क्यों? शादी ब्याह में नामालूम कौन कौन से मेहमान आएंगे, उनमें से तो मंत्री भी होंगे, सांसद भी होंगे, सरकारी अधिकारी भी होंगे, नामालूम कौन किससे फायदा ले रहा है। तो मुझे लग रहा है दिस इज स्ट्रेचिंग इट टू फार। हाँ, the sense of propriety has not to be carried on your sleeves. It has to be practiced. It comes out of conviction and the courage of conviction. तो मुझे लगता है कि इसको उस तरह से जोड़ करके इसको राजनीतिकरण करना ना ही ये हो पाएगा और ना ही ये मुनासिब है। पर इसको वो फिर वही बड़े इशू से जोड़ रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं देश में। चीफ ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कभी दिखावे से कॉम्प्रोमाइज
हो जाएं तो फिर वो इंस्टीट्यूशंस में इसका मतलब यह है कि वो मजबूती नहीं है। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ही यह है कि उसकी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है। इट हैज नॉट टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड। If it has to be demonstrated, that means it doesn't have its own inherent strength. And if it has its inherent strength, it's rather healthy that everything is transparent. अगर दोनों मिलते हैं, executive and judiciary, and they cooperate in the larger task of nation building, what's wrong in that? Moving on, Karnataka's Mandya was gripped by overnight communal tensions as arson, violence and vandalism erupted after stones were allegedly pelted at a Ganesh Chaturthi procession. The BJP has called it a result of the Congress government's appeasement politics. Chief Minister Siddaramaiah, meanwhile, has vowed strict action, but his Home Minister has dismissed the riots as non-communal, claiming stone pelting was accidental. Stones pelted, vehicles torched, bike showroom vandalized. These images are from the Mandya district in Karnataka. A communal clash broke out during a Ganesh Visarjan procession at Nagmangala on Wednesday. According to the police, stones were pelted on the procession, allegedly from near a mosque, and then the other community retaliated. Entire shops has been brought down to ashes. As you can see, truly terrible visuals from the communal clash that broke out last night in Nagamangala, which is in Mandya district. The government says that the accused from both communities, both Hindus and Muslims, have been arrested. The only reason why members from the Muslim community pelted stones is because the Ganapati procession was passing via a mosque and it was halted there for a prolonged period of time. Over 50 people have been arrested by the police so far. The situation is now under control. We are investigating the case. Already registered 3 cases. One suo motu case by our police. So far we have secured some 50 people from both the sides. So we are working on it. We are keeping eye on the developments. The Siddaramaiah government issued a stern warning and assured that those trying to divide Karnataka in the name of religion won't be spared. It is controlled, it is peaceful at the moment. All the senior officers are camping there, so nothing to worry. Okay. So anybody is detained, so what is the reason? We have arrested some 52 people from both the sides. Both the sides they have arrested. The BJP-JDS alliance went all guns blazing against the Siddaramaiah government and called the incident a result of Congress's appeasement politics. सिद्धारामैया हिंदुओं का खिलाफ है। सिद्धारामैया केवल माइनॉरिटी का अपीसमेंट कर रहे हैं एंड मैं मांग रखती हूँ एनए भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तब सत्य क्या है पता चलेगा. Some miscreants, they have tried to disturb that procession. Here the failure of the government is everybody is criticizing because of government inefficiency to actually give some protection to one section of the society. This kind of thing is occurring again and again after this government came. Meanwhile, a 2023 video from Mandya has also emerged. The video shows 2 communities getting into a verbal altercation during a Ganesh Visarjan procession in front of the same mosque. The police had then intervened and brought the situation under control. With Anaga Keshav in Mandya, Bureau Report, India Today. That's all we have time for in this edition of 7 at 7. Thanks very much for tuning in.